left-arm orthodox finger spin coming into the piece, and he will be given a long off and a deep mid wicket to start off. So Johnny Bairstow, you know how strong he is against the spinners. I still remember the way he played against Ravindra Jadeja in the 2019 World Cup. Incredible innings that was, incredible counter punch when the Three Lions really needed it. They were struggling in that World Cup at that stage. This time fired down the leg side, and he will start with the wide. So already the pressure is on Mitchell Santner. Higher, it makes sense now. I mean, look, albeit Bolt is a very good bowler, but right now today, बहुत महंगा साबित पड़ा. So let's change it up. Let's change the pace. Good bit of captaincy, I feel here, by the New Zealand captain Latham, who is of course standing in for Kane Williamson. So I like it. Change the pace, and let's see if the batsmen are still wanting to attack with not so much pace on the ball. Next delivery slightly fuller and beautifully pushed towards that wideish long off region. Chapman will clean it up, and yet another single added to the score. The One Run, brought to you by Danube Properties. Get your dream home with Danube Properties at 1% payment plan. The left-handed comes into play against a left-handed bowler. This is going to be an interesting equation. A deep square leg and a deep mid-wicket in place for the left-handed David Malan. And always this equation of a left-handed bowler against a left-handed batter, generally we've seen goes in favour of the batter, but this time just pushing it towards Mark Chapman standing at the mid-on region will be a single, and that'll bring Bairstow back on strike. Actually, काफी अच्छी कप्तानी का we have been able to see it, because we all know that Malan is not really going to attack the left-arm spinner right now, because he थोड़ा मोहताद होके खेलता है, you know what I mean, and early in his innings. And of course the ball is always turning away from Johnny Bairstow. So good bit of captaincy, good change of a pace, and the right bowler I feel has been introduced into the game to stem the flow of runs for New Zealand. And of course there is no Inderbir Singh Sodhi, Ish Sodhi in the side today. That was a big surprise for me. Meanwhile, England are 38 for none after 6.3. ICC Men's Cricket World Cup 2023 on Talk 100.3. Ball by ball. Brought to you by Zurich International Life, for when life throws you a googly. Rexona with 72-hour non-stop protection. Brook Bond Red Label Tea, perfect blend for strong taste and colour. Bricks and Woods, turning real estate goals into reality. Al Ras, the #1 auto AC parts dealer in the Middle East. Al Ghurair. Get free registration, free tinting and free service. Call 600 54 0045 to learn more. Bring life to your home by painting your walls with Jotun paints. Jotun protects property. Participate in Mahzoos Saturday Millions. Match 5 winning numbers to become a millionaire. Visit mahzoos.ae now. Millionaires are made on Saturday. T&Cs apply. Danube Properties brings to you Oceans by Danube. Wake up to breathtaking sea views from your home. Celebrate you by winning Emaar gift cards. Spend 500 dirhams or more using your Emirates NBD U by Emaar card. Offer valid till 31st October. T&Cs apply. Just like a perfect shot in cricket, Super General Refrigerators keeps your drinks perfectly ice cold, so you can stay cool while you watch the game. Super General, it's a super feeling. Clear, the world's #1 men's shampoo. Keep a clear head with new Clear Men's Shampoo. 0% dandruff, 100% confidence. All the action, ball by ball. This is Talk 100.3. Hello and welcome to the live ball-by-ball coverage of the ICC Cricket World Cup 2023 from India on Big 106.2 and Talk 100.3. The first game, the inaugural game, England versus New Zealand, the finalists of the 2019 World Cup, going against each other in the very first game, live at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad as Matt Henry continues. The very first delivery, pushing it back to mid-off, will be a dot ball. Johnny Bairstow 23 of 20. David Malan 14 of 23. 39 without loss. England in 7.1 after being put into bat. It was Tom Latham, the stand-in skipper for New Zealand, who won the toss earlier today and elected to field first if you joined in just now. The very first game, Matt Henry
coming into bowl to Johnny Bairstow for the second delivery of his fourth over. Banged in shot this time. Tom Latham with a very good collection. We'll have to keep our eyes on the umpire. And he lets it pass. Very good bouncer there from Matt Henry. Surprise change of length. And Johnny Bairstow was certainly caught unawares. So it's Latham who is the stand-in captain for the Kiwis, and no Ben Stokes in the side for the three lions as well. तो एक तरफ केन विलियमसन नहीं है, दूसरी तरफ बेन स्टोक्स नहीं है, लेकिन कॉम बॉक्स में एक बंदे जरूर हैं, मिस्टर सुधीर त्यागी. गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच एवर, मजा आ गया, एक बंदे हैं. चलिए अगली गेंद, और इस बार उसको पुल कर दिया है, मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद जा रही है, लेकिन वेल डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर बहुत तेजी के साथ सेंटर आया गेंद को फील्ड करने के लिए. तो चलिए खाता यहाँ पर उनकी तरफ से भी हुआ, तो 40 रन बन गए 7.3 ओवर के बाद. और ये पहला मुकाबला अहमदाबाद में खेला जा रहा है 13वें विश्व कप में, और दोनों ही वो टीम जो पिछली बार यानी पिछले संस्करण में फाइनल में भिड़ी थी और इंग्लैंड ने विजय प्राप्त की थी उस मुकाबले में. आज देखना ये है कि कई अपने की प्लेयर्स जो हैं वो दोनों ही टीमों ने उनको विश्राम दिया है या इंजरी कह लीजिए, जो भी वजह रही है, वो नहीं खेल रहे हैं. तो बावजूद उसके आज ये टीम, दोनों टीमें एक दूसरे के समक्ष क्या चुनौती प्रस्तुत कर पाएंगी. खैर इस ओवर की चौथी गेंद हेनरी एक बार फिर से ऑफ स्टंप करेगा, उस बार ड्राइव करने की कोशिश की और इस बार मलान अपनी विकेट गंवा बैठे. एम्पायर की उंगली खड़ी और इसी के साथ ये विकेट गिरती हुई इंग्लैंड के लिए. Well, what a fantastic delivery there from Matt Henry. He was bowling in that channel outside off, inviting David Malan to drive the ball. Behthareen length, behthareen line, a feather edge to the wicketkeeper, and this time Latham makes no mistake. The Kiwis have struck. It is David Malan who has to depart. 40 for 1 England. कोई पैरों की मूवमेंट नहीं थी, सिर्फ अपनी जगह पर खड़े खड़े लगातार वो ड्राइव कर रहे थे. और हेनरी, वेल उनकी तारीफ जितनी भी की जाए उतनी कम, क्योंकि कुछ देर पहले ओएस भी वही उसी बात का जिक्र कर रहे थे कि सिर्फ चौके उनकी गेंदों पर लगे हैं, जिसमें से एक मिसफील्ड था. अन्यथा आज वाकई में हेनरी ने जिस तरह से गेंदबाजी की है, जो एक अनुशासन दिखाया है, बिल्कुल उसी अनिश्चितताओं के दायरे में ऑफ स्टंप के हल्का सा बाहर और टेस्ट करते रहे लगातार, और जिसकी वजह से आज मलान बिल्कुल खुलकर नहीं बल्लेबाजी कर पाए और बहुत जल्दी उनकी विकेट आज गिरती हुई. और अब देखना यह है कि चलिए आखिरकार बहुत देर से जिसका इंतजार था वो कम से कम हासिल कर लिया है न्यूजीलैंड ने. और जैसा कि इस विकेट के विषय में भी कहा जा रहा था कि सेकंड इनिंग में थोड़ी सी बल्लेबाजी करना और आसान हो जाता है. हालांकि अगर आंकड़े पर निगाह डाली जाए तो दोनों ही टीमें, यानी अभी तक जो मुकाबले हैं उसमें 2 टीमें पहले बल्लेबाजी करके जीती हैं और 2 टीमें चेज करके जीती हैं. लेकिन करंट सिनेरियो में डेफिनेटली ये विकेट ऐसी लग रही है कि सेकेंड इनिंग में जो ड्यू फैक्टर होगा उसमें गेंदबाजी करना बहुत मुश्किल होगा. और उसी चीज़ पे आई थिंक लेथम भी बैंक कर रहे हैं कि ड्यू आएगी, ओस पड़ेगी और इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स को भी काफ़ी तंग करेगी. बट फॉर दैट दे विल नीड टू रिस्ट्रिक्ट दिस पावर पैक्ड इंग्लैंड बैटिंग लाइनअप. अगर बेन स्टोक्स बैठ के तो क्या हुआ, हैरी ब्रुक है हमारे पास, अ लॉट ऑफ फायर पावर इन दैट टॉप 7 टॉप 8, और उनकी बैटिंग है भी बहुत लंबी, 9-10 तक वो बैटिंग बॉक्स भी कर लेते हैं, आदिल रशीद भी कर लेते हैं, हर कोई कर लेता है. अहमद फिर तो 11 हो गए यार. 11 ही हो गए. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. देखिए 11 नंबर तक बल्लेबाजी है, लेकिन यहाँ पर वही है कि अगर आप मुकाबला खेल रहे हैं तो ये विकेट जब आपको मिलती है तो थोड़े से ब्रेक लगते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के पास 11 बल्लेबाज हो या 10 हो, थोड़ा ब्रेक लगेगा तो रनों में थोड़ी सी गति थोड़ी कम होगी. चलिए अब रूट आ गए हैं और वेल पहली गेंद बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल कह रहे हैं कि जिसको स्टंप्स के अंदर फिनिश करने वाली गेंद, कोई ज्यादा प्रयोग नहीं, एग्जैक्टली वैसा ही हेनरी के द्वारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है. अच्छे लंबे कद के गेंदबाज हैं और जिस तरीके से गति में भी उन्होंने परिवर्तन किया है पिछले कुछ गेंदों में हमने देखा, और यहाँ पर भी स्वागत जो हुआ वो बहुत कमाल का हुआ. बिल्कुल स्टंप्स के अंदर गेंद पहुंची, और किसी भी नए बल्लेबाज के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप स्टंप्स के अंदर गेंद डालें. पहली गेंद है, उसके बाद बल्लेबाज को करने दे जो इसी बीच अगली गेंद, और इस बार थोड़ी सी ऊपर यानी ड्राइविंग लाइन पर थी, और इस बार ऑन साइड पर मिड ऑन पर गेंद को खेला बहुत तेजी के साथ. वहां पर जो रूट ने रन लिया, अपना खाता खोला, 2 गेंदों पर 1 रन, स्कोर 41 से 1 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड. Well, that's right. Opening his account with a single. That one run that matters when you are opening your account. The One Run, brought to you by Danu Properties. Get your dream home with Danu Properties at 1% payment plan. So England are 41 for 1 after 8 overs. Joe Root, interestingly, coming in at number 3. So looks like that will be his role at the World Cup, to bat in that crucial anchor spot after the openers. And then you have the likes of Ben Stokes, Harry Brook, Liam Livingston. So many power hitters in that middle order. Moeen Ali as well. Then you have Chris Wokes, very talented batter in his own right. So plenty to come here for the three Lions.
जॉनी बेस्टो स्टिल एट द क्रीज 24 of 22 और एक बहुत बड़ा उन्होंने फैसला लिया था वर्ल्ड कप से पहले कि जेसन रॉय वर्ल्ड कप विनर को वो लोग इस अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड 15 के स्क्वाड में शामिल नहीं किया, 18 में भी नहीं किया। उनका भाई तू बैठे रहे, हमारे पास पहली बहुत बैटिंग है। मिचेल सैंटलर इन एंड इमीडिएटली द रिवर्स comes out from Joe Root. He takes a quick single to that short third position. जी एक अच्छा रन उनके द्वारा जरूर, हालांकि एक रन से खाता बड़ा 42 एक विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड। तो वेल एनीवे देखिए अभी बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं जो रूट, और हैरानी की बात यही थी कि जिस तरीके से उनको टीम में शामिल किया और नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। वेल ये दिखाता है कि बाकी टीम किस तरह से बैक कर रही है। इसी बीच अगली गेंद सेंटर की ऑन ड्राइव और गेंद मिड ऑन पर बिल्कुल सर्कल के अंदर 30 गज के दायरे के अंदर, और गेंद को फील्ड किया गया। रन बनाने का कोई मौका नहीं, अच्छी फील्डिंग। तो ये दिखाता है कि टीम के अंदर आत्मविश्वास कितना है। उन्हें मालूम है कि चलिए एक हमारे ऐसे मैच विनर है कि अगर ये भी फॉर्म में आ गए तो हमारा टॉप ऑर्डर बिल्कुल बहुत बढ़िया हो जाएगा। अगली गेंद इस बार हल्का सा रूम बनाकर पॉइंट की दिशा में उस गेंद को पुश किया और वहां पर फील्डर मौजूद थे। रन बनाने का एक बार फिर से कोई मौका नहीं। England team is a classic example of no hyper dependency on an individual. You know, gone are the days when team used to be also dependent on one or two batters that would take the charge and the load of the entire team. Meanwhile, this time has been driven towards the mid-off region. Will get a single and will bring Root on strike, 43 for 1 and 8.4. There used to be a time when teams were dependent on a couple of players, you know, and so clearly so. In the example of the Indian side, you know, with Sachin Tendulkar taking the load of the Indian side for decades, I would say, literally, that if he would get out, people would switch off their television sets, and that has changed drastically from that era to what we see today, that there are at least 4 or 5 players, and I say players, I am talking about batters or bowlers, who on their own accord can change the direction of the game. एब्सोल्युटली, और लगातार वो हर टीम में दिखाई दे रहा है। इसी बीच अगली गेंद उसको स्क्वायर ड्राइव कर दिया है। गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट और कवर्स के फील्डर बहुत तेजी के साथ दौड़े वहां पर, गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो किया, लेकिन 2 रन आसानी के साथ बल्लेबाज वहां पर हासिल करेंगे। बेस्ट स्ट्रोव वेल 27 के योग पर पहुंच चुके हैं 26 गेंदों पर। फिलहाल 9 ओवर हो गए समाप्त, स्कोर 46 एक विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड। Talk 100.3 ball by ball. Brought to you by Zurich International Life. For when life throws you a googly. Rexona with 72-hour non-stop protection. Brook Bond Red Label Tea. Perfect blend for strong taste and color. Bricks and Woods. Turning real estate goals into reality. Al Ras, the #1 auto AC parts dealer in the Middle East. Make 2 money transfers with Al Fadhan Exchange and get a chance to win 2 tickets to the ICC Men's Cricket World Cup Final. Visit your nearest Al Fadhan Exchange branch or download the Alpha Pay app today. Tired of the long-term commitment involved with car ownership and car leasing? Experience convenience with Subscribe Me, your subscription app for car freedom. Can't wait to get away from the hustle and bustle of the city to spend some serene time by the sea? Danube Properties brings to you Oceans by Danube. Witness 360-degree panoramic views of the sea from your home with exclusively designed interiors and luxury furnishing by premium Italian brand Tonino Lamborghini Casa. Wake up to breathtaking sea views away from the busy city life with your waterfront home at Oceans at an easy 1% payment plan. Oceans by Danube. When the cricket fever rises, stay chill with Super General air conditioners and feel the breeze of victory. Super General, it's a super feeling. Celebrate you by winning EMAR gift cards. Spend 500 dirhams or more using your Emirates NBD U by EMAR card. Offer valid till 31st October. T&Cs apply. Upgrade your car by trading in your current car with AG Used Cars by Al Ghurair. Get free registration, free tinting and free service. Call 600 54 0045 to learn more. This World Cup, the game is brewing. Remember to enjoy the matches with your favorite cup of Brook Bond Red Label Tea. Perfect blend for strong taste and color. ICC Men's Cricket World Cup 2023. Ball by ball action on Talk 100.3. Hello and welcome to Big 106.2 and Talk 100.3, bringing live ball-by-ball action of the ICC Men's Cricket World Cup 2023. Live from the Narendra Modi Stadium, the inaugural game, England versus New Zealand. The 2 teams that fought over for the title in 2019 finals at Lord's are giving us an opening spectacle
Matt Henry absolutely on the money. The way he's bowling in his 5th over, has just given 17 runs, has picked up a wicket. 47 for 1 England in 9.4. What looked like a good start for England has now suddenly swayed towards the New Zealanders. आई थिंक नहीं, शायद यही प्लान भी होगा इंग्लैंड का कि पहले आप 10 ओवर्स में ज़्यादा विकेट ना गंवाएं, क्योंकि उनके पास वो एक पीछे बल्लेबाजी इतनी लंबी है। खैर इसी बीच अगली गेंद अच्छा ड्राइव, लेकिन एग्जैक्टली मिड ऑफ पर गेंद पहुंची और रन बनाने का कोई मौका नहीं। तो शायद प्रयास भी यही होगा कि पहले 10 ओवर्स आप सिर्फ 1 विकेट पे निकाल जाएं, 2 विकेट पे निकाल जाएं, उसके बाद इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप है कि उसके बाद आपके पास अगर बेस्ट ऑफ 20 ओवर तक रुक जाए, 25 तक भी रुक जाए सपोज, तो आई थिंक ये सारी रिकवरी बहुत आसानी के साथ हो सकती है। और वहीं पर जो रूट जैसे एक ऐसे मजे हुए बल्लेबाज जिनके पास पूरा मौका रहे कि वापस फॉर्म में आ सकें, ये आई थिंक वो उस तरह का गेम डेफिनेटली इंग्लैंड ने प्लान किया होगा। खैर अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर फिर से ड्राइविंग लाइन पर, और इस बार गैप में निकाल दिया, गेंद जा रही है एक बार फिर से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, 4 रन। Boundary Drive. Brought to you by Concord Car Freshener. Smells really good. Subscribe Me, your car subscription app. Super General. It's a super feeling. Emirates NBD. Celebrating 5 years of you by Emaar. थोड़ी सी ओवर पिच गेंद थी मैट हेनरी की और करारी ऑफ ड्राइव फ्रॉम जॉनी बेयरस्टो दैट स्क्रीम्ड अवे थ्रू द कवर्स फॉर अ 4 and that will take us to the 10 over mark. England are 51 for 1. तो थोड़ी सी current trends पे भी बात करते हैं। Current Trend, brought to you by Beverly Hills Polo Club, the true Californian lifestyle brand. Well, England had a very solid start thanks to Johnny Bairstow's early aggression, but picking up that wicket of David Malan, I think that has just swung the pendulum towards the Kiwis. But I would still say it's just about 50-50 between the two. Current Trend, brought to you by Beverly Hills Polo Club. Live the Beverly Hills lifestyle. For the boundary on the last ball of Matt Henry, England have crossed the 50 mark, have reached 51 and brings up their milestone moment. Zurich Milestone Moment. Brought to you by Zurich International Life. Celebrate every run. Ensure every dream. Mitch Santner to continue. 9 runs he's given in his first 2 overs. First delivery of the fresh over. Push towards the covers, will get a single there. And what is really interesting is that between these two now, there looks a lot of calmness with Root and Bairstow coming in. David Malan did look a little tentative, did look a little iffy when he was batting, but between these two, it looks a scenic calmness as they bat through. बिल्कुल नहीं, और ऐसा लग रहा है कि शायद पता नहीं कितने लंबे समय से बल्लेबाजी कर रहे हो। और उसका सबसे अच्छा जो एक उदाहरण है वो ये है कि सिंगल्स लेना बहुत आसान सा दिखाई दे रहा है। अभी तक अगर गेंदबाजी के विषय में थोड़ी सी चर्चा हम करें तो जब बेस्टो आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए तो गेंद थोड़ी सी हवा में फ्लैट रखी जा रही है। वहीं पर जो रूट जब बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तो सेंटर थोड़ा सा और फ्लाइट के आइए, चलिए ड्राइव कीजिए मुझे और देखना ये कि अब क्या होता है। खैर इस बार ठीक उसके विपरीत थोड़ा सा विद आम तेज गेंद उन्होंने फेंकी, ऑन साइड पर गेंद पहुंची और जब तक यंग ने गेंद को फील्ड किया 1 रन और बल्लेबाजों ने हासिल कर लिया। The One Run, brought to you by Danube Properties. Get your dream home with Danube Properties at 1% payment plan. One of the very best players of spin we have in international cricket, Joe Root, 6 of 9, playing Mitchell Santner very deep in the crease, so they're just pushing the 1s and 2s now. Mitchell Santner, 2.3 overs gone by, none for 12. He's been bowling steady stuff here, not particularly threatening, but he is keeping a lid on the scoring. Outside edge, this time it was a slower delivery board, very nicely in the air, a hint of grip off the surface, लेकिन slip में कोई नहीं है सुधीर सर। अहमद, इससे पहले मैं वही बात जो हम जिक्र कर रहे थे कि आपने बेस्ट्रोव के सामने पहले ही हथियार डाल दिए। वहाँ पे आप तेज गेंद डाल रहे हैं, वो बैकफुट पर आराम से कभी पंच लगा रहे हैं, कभी प्लेस कर रहे हैं, और जैसे ही आपने फ्लाइट डाली वहाँ पर वो फंस गया। एक बार फिर से देखिए, फॉलोअप डिलीवरी जो थी वो तेज गेंद थी और इस बार भी बैकफुट पर जाकर आसानी के साथ उस गेंद को खेल दिया पॉइंट की दिशा में। इस बात के परे कि पिछली गेंद पर आपने फ्लाइट दी थी तो वो फंस गए थे। मेरे ख्याल से यहाँ पर वेल ऑब्वियसली वहाँ पर कप्तान हैं, वो ज़्यादा इस चीज़ को परख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, लेकिन आपको विकेट के लिए जाना चाहिए
और विकेट के लिए आप कब जाएंगे? जब थोड़ा सा अटैक करेंगे। अटैक कैसे करेंगे कि फील्ड भी आप दें और उसके साथ साथ आप थोड़ी फ्लाइट भी डालें। खैर इसी बीच अगली गेंद, और इस बार पहले से और सटीक गेंद और फ्लैट ट्रेजेक्टरी विद द आर्म ऑफ साइड पर गेंद थी और उसको बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश की। रन बनाने का मौका नहीं। ओवर की समाप्ति आफ्टर 11 ओवर्स द स्कोर इज 54 for 1। काफी ज्यादा रिस्क ले रहे हैं इस वक्त जॉनी बेस्टो। ही इज शोइंग ऑल 3 स्टंप्स टू मिचेल सैंटनर। ही इज प्लेइंग विद अ क्रॉस हॉरिजॉन्टल बैट, ट्राइंग टू पुश द बॉल थ्रू द कवर्स। लेकिन जितने वो अच्छे फॉर्म में, जितने वेल सेट हैं, 32 of 33, 4 बाउंड्रीज एंड अ मैक्सिमम टू हिज नेम, वो इस किस्म के रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी बॉल, थोड़ी सी वेरिएबल बाउंस दिखी तो इनसाइड एज बोल्ड होने का या क्लीन बोल्ड होने का बहुत बड़ा चांस है। लेकिन दैट्स द वे इंग्लैंड प्ले। वो खेलते हैं, रिस्की शॉट्स खेलते हैं और अटैक माइंडेड शॉट्स खेलते हैं। So it's going to be 54 for 1 and after 11 overs, so Matt Henry getting a break after an excellent spell, and it's Trent Boult coming back into the game, none for 21 in his 3 overs. England 54 for 1. Scoreboard. Brought to you by Jodhun Paints. Protects property. Mazoo's Saturday Millions. Millionaires are made on Saturday. ICC Men's Cricket World Cup 2023 on Talk 100.3. Ball by ball. Brought to you by Zurich International Life. For when life throws you a googly. Rexona with 72-hour non-stop protection. Brook Bond Red Label Tea. Perfect blend for strong taste and color. Bricks and Woods. Turning real estate goals into reality. Al Ras, the #1 auto AC parts dealer in the Middle East. Concord Car Freshener removes unpleasant odors and purifies the air with refreshing, long-lasting fragrance that smells really good. Get the confidence to move more with the new Rexona deodorant. Get 72-hour non-stop protection against sweat and odor. Cook up a storm with Super General cookers while enjoying the cricket action. Create a recipe for a super match day. Super General, it's a super feeling. Bring life to your home by painting your walls with Jotun paints. Jotun protects property. This World Cup, the game is brewing. Remember to enjoy the matches with your favorite cup of Brook Bond Red Label Tea. Perfect blend for strong taste and color. Al Seeb launches luxury homes. Get your dream home in business pay with a 3-year post handover plan. Call 054 700 672. Get moving with GoWell, the rewarding health and wellness app. Earn weekly rewards, cashback rewards, multi-gym pass, and so much more on the GoWell app. Say no to excuses and yes to a rewarding fitness lifestyle. Switch to a fitness app that makes fitness rewarding. To start your free trial today, download the GoWell app. GoWell. Get healthy. Get rewarded. All the action, ball by ball. This is Talk 100.3. Welcome back to live coverage of the World Cup on Talk 100.3 and Big 106.2. And Joe Root plays his typical loft over third off Trent Boult, and it's sailing away behind the keeper for a 6. Boundary Drive. Brought to you by Concord Car Freshener. Smells really good. Subscribe Me, your car subscription app. Super General. It's a super feeling. Emirates NBD. Celebrating 5 years of you by Emaar. मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ट्रेंट बोल्ट को जो गेंदबाजी करा रहे हैं वो सिर्फ मार्क बनाने के लिए, ताकि स्पिनर्स जो हैं उन मार्क से अच्छी गेंदबाजी कर सकें। क्योंकि ये समझ में नहीं है, आप आए हैं, आप राउंड द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं और विद द एंगल। बट खैर यहाँ पे तारीफ ज़्यादा जो रूट की होगी, जिस तरीके से उन्होंने रैम्प किया। वेल इसी बीच अच्छी गेंद, इस बार बाउंस थोड़ा सा कम था और फ्रंट फुट पर आकर उसको चलते हुए खेलने की कोशिश की थी जो रूट ने। गेंद उनके बल्ले से ज़रूर टकराई। वेल अभी अगर आंकड़ा देखा जाए तो 60 रन बन चुके हैं। पहला पावर प्ले खत्म हो चुका है, दूसरा चल रहा है और रन रेट जो है उसमें इजाफा हुआ है। जो पहले 10 ओवर में सिर्फ 4.8 या 4.6 के आसपास थी, अब वो 5.07 तक पहुंच गई है। दोनों ही बल्लेबाज काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफी पॉजिटिव हो गए हैं और ऐसा लग रहा है कि अब परेशानी जो है वो थोड़ा सा न्यूजीलैंड के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है, गेंदबाजी में खासतौर से। इसी बीच अगली गेंद, और इस बार भी 3/4 लेंथ की गेंद थी और बैकवर्ड पर जाकर आसानी के साथ ऑफ द खेल दिया उसको डीप फाइन लेग में, जहां पर वेल डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में रादर निशिम मौजूद थे और बहुत ही उम्दा थ्रो उनके द्वारा, लेकिन फिर भी रन लेने में कामयाब रहे और 1 रन और खाते में जुड़ा। The One Run, brought to you by Danube Properties. Get your dream home with Danube Properties at 1% payment plan. You definitely would feel on the back foot if your frontline bowler
the world-class Trent Bolt is taken for runs. And it's not just about being taken for runs, it's about with the ruthlessness, the disrespect that has been shown to Trent Bolt. You know, we normally say that, hey, play the ball, not the bowler, but then there's some amount of respect that you show the bowler. But this time, the way Joe Root hit that six, going across the line, trying to ramp it, reverse, I mean, there was absolutely no respect to whatever Trent Bolt has done. He said, listen, I'm going to hit you and I'm going to hit you wherever I feel like. Santner coming into bowl this time to Joe Root and has been played defensively. After a very long time, I've seen this front foot defense come into play. लेकिन उस रैंप के लिए जो ये मारते हैं, ये टेस्ट क्रिकेट में ये शॉट भी मारते हैं, परसेंटेजेस बनती नहीं थी. राउंड द विकेट ट्रेंट बोल्ट आ रहा है, 135 140 का बॉलर है, लेकिन तुमने फिर भी ये शॉट अटेम्प्ट की और एग्जीक्यूट भी की. ये खासियत थी, ये कमाल था जो रूट की शॉट का. आई थिंक ही डिजर्व्स अ स्टाइलिश शॉट. Stylish shot brought to you by Beverly Hills Polo Club. Free-spirited Californian lifestyle. 80 मीटर लंबा छक्का था वो, और जिस तरीके से वो अपने आप को उन्होंने पोजीशन किया, वेल अनबिलीवेबल. ऐसा लग रहा था कि पता नहीं शायद कोई स्पिनर गेंदबाजी करने के लिए आया और आपने अपने आप को पोजीशन करके उस गेंद को रैम्प कर दिया और गेंद उड़ती हुई चली गई थर्ड मैन के ऊपर से. वेल अनबिलीवेबल स्ट्रोक्स. वेल अभी तो बात ये चल रही थी कि रूट जो है अच्छी फॉर्म में नहीं है. अगर अच्छी फॉर्म में ये स्ट्रोक नहीं लग रहे, मतलब सॉरी अच्छी फॉर्म नहीं है तो ये स्ट्रोक लग रहे हैं, तो भाई जब अच्छी फॉर्म होगी तो अब वो क्या करेंगे. वेल भारतीय विकेट उनको बहुत ही रास आती हैं. ये हमने पिछली कई सीरीज में देखा है जब भी टीम इंग्लैंड जो है वो इंडिया के दौरे पर आई है. खैर इसी भी चकली गेंद और इस बार डाउन द लेग, हालांकि स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद जरूर थे और वहां पर वेल आउट ऑफ फॉर्म मैं कहूंगा फिलहाल बोल्ट थे. जिस तरह से उन्होंने गेंद को उठाया, एक ही एक्शन में वापस थ्रो किया, एक रन फिर भी बल्लेबाजों को मिलता हुआ. 63 for 1 इंग्लैंड. 33 रन पर बेस्टो 34 गेंदों पर, और जो रूट बिल्कुल अब जो डिफरेंस उसको कम करते हुए 17 गेंदों पर 14. इस बार फिर से सामना करेंगे और इस बार ऑफ साइड पर गेंद थी और बैकफुट पर बहुत तेजी के साथ गए, पंच किया एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, निशम ने गेंद को फील्ड किया, एक और रन बनता हुआ. और प्रॉब्लम यह है कीवीज के लिए कि उनकी फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है इस मैच में. देयर इज़ नो लॉकी फर्गसन, देयर इज़ नो टिम साउदी. जिमी नीशम से अगर उनको ओवर लेने पड़ गए फिर तो कुटास का टाइम बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगा. डैरिल मिचेल भी मीडियम पेस डाल सकते हैं. This time a chip towards long off and taken! A brilliant running catch by Daryl Mitchell, and Johnny Bairstow has thrown it away. England have lost their second wicket. How's that? This was so against the run of play. Definitely not expected, definitely not anticipated. It was a delivery that could have been played anywhere, but he goes aerial and it's not even a full-blooded shot. It was a half-hearted shot. He almost checked his shot, realizing that Daryl Mitchell is just around there, and Mitchell Santner successful in getting rid of Johnny Bairstow. आई थिंक जो प्लान किया था उनके विरुद्ध वो सही एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि लगातार उनको फ्लाइटेड डिलीवरी दी जा रही थी और इनसाइड आउट के लिए बोला जा रहा था कि आइए सर खेल के दिखाइए, आप कैसे खेलते हैं बताइए ज़रा. तो इस बार आपने बिल्कुल सही कहा नील, जैसे उन्होंने स्ट्रोक को चेक किया वहीं से ही अंदेशा लग गया था कि जिस डायरेक्शन में वो खेलना चाह रहे थे गेंद वहाँ तक नहीं आई है, और इसीलिए काफ़ी सीधी गेंद पहुंची जिसमें हल्का सा ही दौड़ना पड़ा लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को, और बहुत ही उम्दा कैच वहाँ पर देखने को मिली. और यही अक्सर देखने को मिलता है, जॉनी बेस्टो गेंदबाज उनको आउट नहीं करता, आमतौर पर वो खुद अपनी विकेट थ्रो करके चले जाते हैं. और ये इंग्लैंड के लिए बहुत 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 बड़ी मैं कहूँगा सिरदर्दी है कि किस तरीके से जो टॉप ऑर्डर है उसको लंबी पारी या लंबी इनिंग्स बनाने में अभी तक पिछले काफ़ी मैं कहूँगा मैचेस से वो सफलता नहीं मिल पा रही है जो जिस चीज़ के लिए वो जाने भी जाते हैं, और उम्मीद भी करती है उनकी टीम. फिलहाल 2 विकेट डाउन है और स्कोर है 64. एंड आई थिंक मिचेल सैंटनर को भी क्रेडिट देनी चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने फ्लाइट की गेंद को. ही डिडंट गेट टू द पिच ऑफ द बॉल थे बेस्टो, थोड़ा सा उनका बैट उधर लटका रह गया था. दैट्स व्हाई उन्होंने जैसे टाइम करने की कोशिश की, पावर नहीं लगा. एंड डैरिल मिचेल बहुत ही आउटस्टैंडिंग फील्डर, बहुत अच्छा कैच पकड़ा है. अहमद वही देखिए, आप जब किसी खिलाड़ी को रीड करते हैं तो उसके जो पॉजिटिव्स हैं नेगेटिव्स हैं उनका आकलन आप करते हैं. तो यहाँ पर बॉल 1 से ही शायद वो आकलन बिल्कुल सही और सटीक था, क्योंकि बेस्टो अपना फ्रंट फुट बहुत ज़्यादा नहीं निकालते हैं, अपनी क्रीज में या क्रीज का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, और इसीलिए शायद उनको बहुत ज़्यादा लगातार फ्लाइट गेंद की जा रही थी. और हमने पिछली कुछ गेंदों में देखा भी था कि गेंद थोड़ी सी ग्रिप कर भी रही थी, और शायद उसी का खमियाजा उन्होंने भुगता. और देखिए जो खिलाड़ी हैं वो ऐसा नहीं है कि बाउंड्री बिल्कुल उसके पास खड़े हैं, बाउंड्री से 5 या 10 कदम अंदर खड़े हैं, और शायद वही एक वजह रही कि आसानी के साथ वहाँ पर कैच को लपक लिया गया थोड़ा सा दौड़ने के बाद. बट चलिए, सेंटर नो डाउट बहुत ही कंसिस्टेंट और बहुत ही अच्छी उम्दा गेंदबाजी करते हुए
3.5 ओवर में 1 विकेट मिली है। और चलिए अब अटैक भी होना शुरू हो गया है। स्लिप आ गई है एक, और पहली गेंद ब्रुक बिल्कुल फ्रंट फुट पर आकर उस गेंद को बैट और पैड साथ मिलाकर रक्षात्मक रूप से खेल दिया। अच्छे खासे लंबे कद के बल्लेबाज हैं और काफ़ी अच्छी फॉर्म में भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी कुछ देर पहले हम जो ओवेश भाई से भी बात कर रहे थे कि भाई अगर की प्लेयर बेन स्टोक फिट होते हैं तो कौन से खिलाड़ी बाहर होंगे, तो उन्होंने इन्हीं का नाम लिया था। हालांकि मुझे लगता है कि शायद क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है, तो टीम के लिए दुविधा रहेगी कि वाकई में क्या उनको बाहर किया जाए या उनकी जगह कहीं जो रूट पर छुरी ना चल जाए। और मज़े की बात यह है कि इनिशियल 15 में हैरी ब्रुक नहीं थे स्क्वाड में, उनको फिर जेसन रॉय को उन्होंने बेदखल कर दिया और हैरी ब्रुक को लाए, और आज बेन स्टोक्स इंजर हो गए तो फिर हैरी ब्रुक आ गए। तो तकदीर में लिखा हुआ था कि इन्होंने वर्ल्ड कप ओपनर खेलना ही खेलना है। ट्रेंट बोल्ट कमिंग इनटू द अटैक वंस अगेन, slightly sliced away towards deep third by Joe Root. Now he has to be the man that carries this innings forward, and he picks up another 1 run. The One Run, brought to you by Danube Properties. Get your dream home with Danube Properties at 1% payment plan. ऐसा लग रहा है कि दोनों ही बल्लेबाज थोड़े से टेंटेटिव हैं। इवन ड्राइव लगाने में या फ्रंट फुट पर आने में थोड़ी सी दिक्कत सी हो रही है। और इवन वो चीज़ बहुत अच्छी नोटिस की थी शायद बेयरस्टोव की भी, इसीलिए शायद ज़्यादा ड्राइविंग लेंथ पर उनको गेंदबाजी दी जा रही थी। और ये दोनों बल्लेबाज भी, इवन ब्रुक खैर वो तो अभी आए हैं, लेकिन जो रूट भी उस कॉन्फिडेंस के साथ, उस आत्मविश्वास के साथ ड्राइव नहीं कर पा रहे। खैर इसी बीच अगली गेंद शॉर्ट ऑन डिलीवरी थी और उसको पुल कर दिया है और गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रन। Boundary Drive. Brought to you by Emirates NBD. Celebrating 5 years of you by Emaar. Concord Car Freshener. Smells really good. Subscribe Me, your car subscription app. Super General. It's a super feeling. This has been the trend for New Zealand so far. That from one end they've been able to put on the brakes, they've been able to apply pressure, but from the end of Trent Bolt, runs have been leaking. That boundary taking the pressure off that wicket completely, and this is not good. This is definitely not good from a New Zealand perspective. While Matt Henry started the innings brilliantly, there were runs being leaked by Trent Bolt, and it hurts when you say something like this, that Trent Bolt hasn't been able to deliver. Mitchell Santner has just picked up a wicket, but again Bolty giving out a boundary on that previous delivery. It was a nothing delivery. It was back of the length at a pace which was absolutely hittable, and it's making life oh so simple for Harry Brook, who's just arrived to the crease, bowling the mid 130s and lengths that are very, very comfortable for the English batters to bat on. This is the story of Trent Bolt, this time pushing it back to the bowler, a dot ball. एंड लेथम वुड हैव थॉट कि चलो अब विकेट गिरी तो मैं ट्रेंट बोल्ट के जो इनिशियल स्पेल के ओवर्स हैं मैं थोड़े से निकाल लूँ, बट इंग्लैंड वेरी स्मार्टली स्टिल गोइंग आफ्टर हिम, एंड हैरी ब्रुक विद दैट टिपिकल रिस्टी फ्लिक टुवर्ड्स दैट स्क्वायर लेग रीजन. उनकी ये ट्रेडमार्क शॉट एंड ब्यूटीफुली पुट अवे फॉर 4. नेक्स्ट डिलीवरी फुल आउटसाइड ऑफ बट ट्राइंग टू कट इट ऑफ द बैक फुट. सो थोड़ा सा अनश्योर है इस वक्त हैरी ब्रुक. हमने देखा था आईपीएल में एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग 100 उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए मारा था, लेकिन ओवरऑल इट वाज अ डिजास्टरस कैंपेन. बहुत ही हैवी प्राइस टैग इनके लिए पे किया था सनराइजर्स ने, और उनका फेलियर का सबसे बड़ा एक ये वजह भी थी कि हैरी ब्रुक ने उस तरीके से रन्स नहीं दिए. सुधीर सर जी हाँ, और वो दबाव आज भी दिखाई दे रहा है कि भारतीय आप परिपाटी पर दोबारा आ गए हैं, आपको नापा जा रहा है, मापा जा रहा है. और फिलहाल वो खिलाड़ी जिसने 2 हैट्रिक लिए हैं विश्व कप में. खैर इसी बीच अगली गेंद, और इस बार भी ऑफ स्टंप पर ये गेंद थी, रक्षात्मक रूप से खेला. चलिए देर से ही सही, लेकिन अब 2 ऐसे गेंदबाज भी ऐसे हैं जो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, वहीं पर बल्लेबाज भी ऐसे जो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं. पर चलिए ओवर की हुई है समाप्ति, और 14 ओवर के बाद स्कोर है 69 for 2. इंग्लैंड जो कि आज पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं. हालांकि टॉस आज न्यूजीलैंड ने जीता था और उनको आमंत्रित किया था पहले बल्लेबाजी करने के लिए. Talk 100.3. Ball by ball. Brought to you by Zurich International Life. For when life throws you a googly. Rexona with 72-hour non-stop protection. Brook Bond Red Label Tea. Perfect blend for strong taste and color. Bricks and Woods. Turning real estate goals into reality. Al Ras, the #1 auto AC parts dealer in the Middle East. Bring life to your home by painting your walls with Jotun paints. Jotun protects property.
Relax on a white sandy beach in the Maldives. Indulge in a luxurious high tea in London's Mayfair. Experience the bright lights of New York City. Let every moment make way for many more travel experiences. Introducing the Marriott Bonvoy World Mastercard Credit Card from Emirates NBD. Earn up to 200,000 bonus points and redeem at over 7,000 hotels worldwide, flights, VIP experiences and more. To apply for the Marriott Bonvoy World Mastercard from Emirates NBD, SMS Bonvoy to 4456. Terms and conditions apply. Get the confidence to move more with the new Rexona deodorant. Get 72-hour non-stop protection against sweat and odor. Clean up your game day jersey with Super General washing machines so you can focus on what matters the most, cheering for your team. Super General, it's a super feeling. Bricks and Woods Real Estate, a group of consultants who are turning real estate goals into reality. Participate in Mahzoos Saturday Millions. Match 5 winning numbers to become a millionaire. Visit mahzoos.ae now. Millionaires are made on Saturday. T&Cs apply. Danube Properties brings to you Oceans by Danube. Wake up to breathtaking sea views from your home. ICC Men's Cricket World Cup 2023. Ball-by-ball action on Talk 100.3. Welcome back to live ball-by-ball coverage of the ICC Men's ODI World Cup on Talk 100.3 and Big 106.2. England 71 for 2 after 14.4 as Harry Brook and Joe Root looking to build a partnership here. Mitchell Santner bowling a very, very effective spell here. He's got that crucial breakthrough of Johnny Bairstow, chipping one to wide-ish long off. And now just the rate of scoring has come down a touch here as Joe Root goes about his business. 18 of 23 and Harry Brook 5 of 7. Mitchell Santner bowling to Brook, no slip anymore, and just hitting the inner splice of the bat, squeezed out to mid-wicket for yet another single. So a tidy over from Santner. England are 73 for 2 after 15 overs. And let's take a look at the current trends of this match right now. Current trend brought to you by Beverly Hills Polo Club, the true Californian lifestyle brand. In the last 5 overs, England have just gone at 4.4 runs per over, 22 runs scored for the loss of 1 wicket. So certainly the current trend is swinging towards the Black Caps. Current trend brought to you by Beverly Hills Polo Club. Live the Beverly Hills lifestyle. 73 for 2, 15 overs gone England as a former England international joins us back in the commentary box. Ovesh Shah, 7 overs you sat out and you were watching the game, and England in that little passage of time lost 2 wickets. What do you make of the situation that England has finding itself into? Well, the situation now is these two have to rebuild a little bit. You know, with Johnny Bairstow, wow, just as we're talking about it, Harry Brook. I mean, this is, he really is a seriously talented young cricketer. What a beautiful shot that was. Harry Brook is real talent in English cricket. You know, a young man making his way into the international team, and he really has took, especially Test cricket, like duck to water. You know, you mentioned to me what now that they've lost 2 wickets. Johnny Bairstow, a kind of cricketer that he is. You know, I mean, he was striking at nearly 95 runs per 100 balls. And a cricketer like Johnny Bairstow, when you get out, what happens is a lot of batters could think, okay, well, you know, it's so easy out here, let me just continue in the same form. But you can't be like that. You got to rebuild and then try and get that run rate back up there, because of course modern day one-day cricket now requires you to get 300 plus, especially in the grounds in India. So that's something England will of course have at the back of their mind. So these two need to rebuild but quickly get into their stride and get the scoring rate up towards where the likes of Johnny Bairstow and of course Malan for a very brief period were attacking the New Zealand bowlers. Well, yes, Jimmy Neesham there opening his bowling. Very first delivery was driven towards the cover fence for a 4. Boundary Drive. Brought to you by Emirates NBD. Celebrating 5 years of you by Emaar. Concord Car Freshener. Smells really good. Subscribe Me, your car subscription app. Super General. It's a super feeling. Beautiful punchy cover drive there from Harry Brook. He really is such a talented player. I'd say he is the next Kevin Peterson for England. He's that level of a talent.